share and before while you talk? No, it's all right. It's perfectly fine. Okay, Assalamu alaikum everyone. We have about 60 participants online, 66 to be exact. Welcome to this webinar. It's a pleasure for PSX that Ali Fareed Saab has agreed to join us and impart his knowledge to the audience. Whenever we at the stock exchange, meet people, meet generally investors, this question comes up again and again. Ji, aap koi tip de dein. Please tell us which stocks we should opt for. What should be in our portfolio? Which are the sectors? So, in order to answer those questions, obviously the stock exchange cannot speak about it or talk about it. So we have been kind enough to have Mr. Ali Fareed Khwaja share his knowledge and expertise from KASB Securities. So I'd like to welcome him, a little about him. He has about 15 years of experience in the field of equity research and investments, not only in Pakistan, but also abroad. Formerly, he was a partner at Autonomous Research, which is now a part of Alliance Bernstein. He is an ex-CFO and board director of Safe Charge Group, LSE SHN. It's a global fintech company, which is top ranked, among the globally. He worked with he's been a top ranked technology analyst in Europe at Berenberg and UBS, as well as he's a Rhodes Scholar. So a lot of accolades and medals. With all that, Ali Fareed Khwaja, I welcome you to share your knowledge and expertise with our audience today. Thank you, Radha. It's a pleasure to speak, and thank you for inviting me for this session. And thank you for the 80 people who are listening to this. And I have a short presentation. As you said earlier, that we'll run the presentation for 30 to 40 minutes, and then I see some people raising hands. We will have quite time for Q&A after that. And the best way for asking questions would be that if you can write it on chat, either to Raida or to me, and Raida can then moderate the session. Otherwise, with 89 people, it becomes slightly difficult. So as Radha mentioned, I am the chairman of KASB Securities. I live in London, and my background from that perspective is slightly different from most people who cover Pakistani equities. That for most of my career, I have covered global sector based here in London. So I'll run a bit through my background because I think it's interesting from the perspective of what we are going to talk about. Originally from Islamabad, went to LUMS, did computer science and economics undergrad. Then I worked in Karachi for a year. This is back in 2004 and 2005. I worked in research as an economist at 2 local brokerages, AKD Securities and Alfala. And then I went to Oxford, and after that I joined UBS to do tech research. Now, this is a very important time in the history of tech research in Europe because I covered Nokia, Ericsson and Alcatel-Lucent. Nokia का फोन पाकिस्तान में बड़ा फेमस था, तो उस जमाने में Nokia, Ericsson and Alcatel combined market cap was $700 billion. Nokia was the single largest commission generator for UBS, which was the top investment bank in Europe. And over 3 years, this whole asset class just shrunk. So that teaches you a lot about how technology moves, how companies react to challenges. So I did that at UBS. Then I moved to an investing role. I joined a hedge fund where I was investing in EMEA markets. So Russia से लेकर Eastern Europe, Middle East, Africa, Pakistan, से लेकर Africa, Egypt, से लेकर the tip of Africa, which is South Africa, पे मैं equity long short investing कर रहा था in 2008 and 2009. Then I moved back to do global tech research at Berenberg, where I covered companies such as Apple, Samsung, Visa, MasterCard, Western Union. So focusing on financial technology, but companies in the space of data centers, semiconductors. तो जो कुछ मैंने deals Berenberg में की, उसमें से कुछ companies जो आप लोगों को पाकिस्तान में पता होगी, जैसे दराज e-commerce की कंपनी है पाकिस्तान में, उसकी मदर कंपनी है रॉकेट इंटरनेट, मैंने उसका IPO किया. आपके आईफोन्स के अंदर और आपके फोन्स के अंदर एक ग्रीन कलर का बोर्ड लगा होता है, जिसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB कहते हैं. वो एक ऑस्ट्रियन कंपनी बनाती है, ATNS. मैंने उनके लिए पैसा रेज किया. अगर आप दुबई जाए या अमेरिका जाए तो आपकी गाड़ी पे स्टिकर लगा होता है पार्किंग के लिए और रोड पे टोलिंग के लिए.
वो एक और ऑस्ट्रियन कंपनी बनाती है जिसका नाम है ट्रैफिकॉम, मैंने उनके लिए पैसा रेज किया. So across Europe, I've raised money for companies from Germany to Spain to Sweden, and I raised around $10 billion at my last role at Berenberg. And then I became, as Raida mentioned, I was CFO of SafeCharge, जो कि UK में एक company listed थी, and then it got acquired for $1 billion. And 2 years ago, I joined KASB Securities in Pakistan. And the reason I joined KASB Securities in Pakistan was that I thought there's massive potential. Pakistan, I thought it's a market which is undercovered in terms of its potential. And there could be a massive gain which can be made by connecting global capital to Pakistan. So मेरा ये aim था कि to use my background, my contacts, my work history and experience to connect global capital. वो अमेरिका से हो या चाइना से हो, जापान से हो, to bring that money into Pakistan. And that was one of the aims for joining KSB. Now, KSB, of course, has a very long history in the capital markets in Pakistan. They have been the pioneers, starting from Mr. Khadim Ali Shah Bukhari, who's founded the company in 1952. And since then, KSB has played a very important and critical role in capital markets development in Pakistan. ये जो तस्वीरें जो स्क्रीन पे लगी हुई है, इसमें वॉरेन बफेट है, जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर जिनको समझा जाता है, मार्क मोबियस है सेंटर में, जिनको इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टिंग का गुरु और फाउंडर समझा जाता है, और राइट साइड पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना हैं जो नासिर अली शाह बुखारी साहब से मिल रहे हैं. तो KSB had played this role for many decades, and I joined them in 2018 with my experience to take it forward by connecting global capital. So some of the things which we are doing is, we have a webinar series where we get global experts from China to the US to come and talk to people in Pakistan, investors in Pakistan, in public forums. So these are open and free forums, and the kind of event which Raida has been kind enough to invite me over here. So now moving to the presentation, what is the most important thing required for investing? जब मैं Raida ने मुझे कहा कि to speak with you, I kept on thinking that how should I format this presentation, and I think the सबसे important चीज जो अगर मैं एक चीज आपको realize करवा दूं या एक चीज आपको emphasize करवा दूं इस presentation में, जो इसमें ख्याल में सबसे important है, वो है ये चीज, trust. Financial markets are based on the notion of trust, ethics, governance. पुराने वक्तों में कहते थे कि my word is my bond. क्योंकि ट्रस्ट अगर ट्रस्ट इस कैपिटल मार्केट से निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बचता. और ये इशू सिर्फ पाकिस्तान का नहीं और कराची का नहीं, ये इशू ग्लोबली. दैट्स हाउ फाइनेंशियल मार्केट्स वर क्रिएटेड एंड दैट्स द एसेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. तो रायदा ने शुरू में बोला कि इन्वेस्टर्स टिप्स मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं, और पाकिस्तान में मैंने देखा है कि इस चीज पे जो एम्फेसिस है ट्रस्ट पे वो कम है, और governance, ethics, these are very important things which should be ingrained in anyone who's participating in the market, whether as a broker, us, or whether you as investors, or whether the exchange or SECP or the companies which are listed. It's imperative that we understand this and we make this as the fundamental stone for whatever we do after that. So it's important to do this. And I bought this picture. आप में से पता नहीं कितने को ये मालूम हो, ये पिक्चर है जोनाथन कॉफी हाउस की यूके में, जहां से लंदन स्टॉक एक्सचेंज बना था. लंदन स्टॉक एक्सचेंज किसी गवर्नमेंट ने नहीं, यूके की गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था, किसी बैंक ने नहीं बनाया था. जोनाथन कॉफी हाउस जो कि सिटी ऑफ लंदन में है, वहां पे लोग आते थे और कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज करते थे, क्योंकि अंडरलाइंग एसेंस था कि माय वर्ड इज माय बॉन्ड. जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ इसको ऑनर करूंगा. और उसकी वजह से, क्योंकि ट्रस्ट इतना स्ट्रांग था कि ये सारा का सारा बिजनेस यूज्ड टू हैपन ऑन अनरेगुलेटेड इन अ कॉफी हाउस. और इसके बरक्स अगर ट्रस्ट ना हो, अगर हम एथिक्स और गवर्नेंस को फॉलो और रूल्स को फॉलो ना करें, तो आप जितने मर्जी रूल्स बना दे, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में भी बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स होते रहे हैं. लेफ्ट साइड पे जो पहली पिक्चर है, ये एनरॉन के सीईओ है, जो कि उस जमाने का अमेरिका का सबसे बड़ा फ्रॉड था. द कंपनी वेंट डाउन टू जीरो. इट वाज वन ऑफ द मेगा कैप्स ऑयल एंड गैस कंपनीज. दरमियान में सत्यम, इंडियन आईटी कंपनी, अगेन अकाउंटिंग फ्रॉड, द कंपनी वेंट डाउन टू जीरो, द सीईओ वेंट टू जेल.
तीसरा अभी हाल ही की एग्जांपल है वायर कार्ड, जर्मनी की कंपनी, 40 बिलियन मार्केट कैप इसकी थी, जो कि 2 हफ्ते के अंदर जीरो पे चली गई। टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का पूरा स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैप $40 बिलियन है। एक कंपनी में जर्मनी में से ज्यादा बड़ा लॉस हुआ है। चाइना, लूक इन कॉफी, अकाउंटिंग फ्रॉड, Bernie Madoff, US, he was insider trading and he was falsifying his record as an investor. Raj Ratnam from Galleon, another US magnate, a big name in hedge fund investing, is in jail right now because he broke that trust. So इसलिए मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि it's fundamental that you understand this, you appreciate it, and आप इसको अपनी लाइफ का और अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी का एक हिस्सा बना दे, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो ग्रीड की वजह से sooner or later you are going to have a loss, and this is something which cannot be stopped by rules. This cannot be stopped by enforcement. This is something which you have to ingrain in yourself. जैसा मैंने बताया कि जोनाथन कॉफी हाउस में बुनियाद रखी गई थी स्टॉक एक्सचेंज की यूके की, और it was all on the basis of trust. So now moving to the second point, why should you invest? And I'm conscious that आप लोग ज़्यादातर जो ये सुन रहे हैं वेबिनार, आपको इन चीज़ों का पहले से पता है क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मगर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इस बात को रेज करना, क्योंकि गोइंग बैक टू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपकी बुनियाद अगर अच्छी होगी तो आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, और आपका जो पूरा का पूरा मनी मैनेजमेंट का जो एम है वो अच्छा होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड कि आप क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट। तो व्हाई शुड यू इन्वेस्ट? यू शुड, पीपल जनरली इन्वेस्ट बिकॉज सेव बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक, एज अ इंश्योरेंस फॉर अ रेनी डे, रिटायरमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल जाने का खर्चा हो सकता है, तो यू नीड टू सेव फ्रॉम योर करंट इनकम इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी ऑफ दीज अनप्लान्ड स्पेंडिंग। दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से आपको सेव करना चाहिए वो है एज अ सेकंड इनकम फॉर अ फ्यूचर नीड। आपने अपने बच्चों की शादी करानी है, उनकी एजुकेशन करानी है, आपने हॉलीडेज पे जाना है, हज उम्रे के लिए सेव करना है, घर खरीदने के लिए सेव करना है, इन सारी चीजों के लिए आपको अपनी तनख्वाह में से, अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा सेविंग के लिए डालना जरूरी है ना। सेविंग के लिए हम सेविंग के लिए हम इन्वेस्ट क्यों करें? सेविंग के लिए इन्वेस्ट इसलिए करें क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो आपकी सेविंग्स को इन्फ्लेशन खा जाती है। आपने सोचा, जैसा मैंने बोला कि मैंने लम्ब से पढ़ाई की, जिस जमाने में मैं लम्ब से पढ़ता था उस जमाने में उसकी साल की फीस होती थी 1.5 लाख रुपए। अब लम्ब की फीस 10 लाख रुपए है, तो 10 गुना ज्यादा सेविंग हो गई है। तनख्वाहें इतनी स्पीड से नहीं बढ़ी मगर खर्चे जो हैं वो स्पीड से ज्यादा बढ़ गए। तो अगर मेरे पेरेंट्स जो थे वो एकेडेमिया में थे, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने सेविंग्स करके मुझे लम्ब से भेजा, लम्ब से कुछ स्कॉलरशिप दी, तो अगर उस वक्त ये सेविंग्स उनकी जो इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज ना हो रही होती तो जो उनका पैसा पड़ा हुआ था उसकी वैल्यू कम होती गई। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट योर सेविंग्स, यू नीड टू इन्वेस्ट। नाउ वी मूव ऑन टू वेयर कैन वी इन्वेस्ट। नाउ इन्वेस्टमेंट की बड़ी ऑप्शन है। अगर मैं अपने फादर से पूछूं तो उनकी सेविंग्स जो है बैंक अकाउंट में है, कुछ रियल एस्टेट में है, कुछ गोल्ड में है। ये ज्यादातर इन तीनों चीजों में उनकी सेविंग है, और उनको पेंशन से जो पैसे मिले थे वो नेशनल सेविंग्स में है। मगर इसके साथ साथ और भी ऑप्शंस हैं। स्टॉक मार्केट इज वन, बॉन्ड्स इज अनदर, कमोडिटीज अनदर, currencies is another one. So it's important that when you're investing, you should think from an asset allocation perspective, and you should take a 360 degrees view. Why is that important? This goes to a second rule of investing. पहला रूल मैंने आपको बोला था is about trust. It's about following the rules. It's about governance and it's about ethics. The second rule for savings is this: diversification. डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ये है कि आपको या किसी को या मुझे नहीं पता कि कौन सा एसेट क्लास की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। हमें ये पता है कि परफॉर्मेंस वेरी करेगी, क्योंकि हमें ये बात पता है कि परफॉर्मेंस वेरी करेगी, मगर हमें ये नहीं पता कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इसलिए द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज डाइवर्सिफाई योर मनी। Now, this is an example. या आपको मैं actual data दे रहा हूँ. This is the data. I think this is produced by Merrill Lynch, and this is the asset performance of various asset classes over multiple years. तो अगर आप देखें कि 2020 में गोल्ड ने सबसे अच्छा आउट परफॉर्म किया, 11.17% रिटर्न है, और ये डेटा थोड़ा पुराना है, मेरे ख्याल में अब ये 15% तक रिटर्न होगा गोल्ड का। मगर गोल्ड को आप 2015 में चले जाएं तो गोल्ड की परफॉर्मेंस
बॉटम थे सबसे तीसरे नंबर पे थी, और 2013 में चले जाएं तो गोल्ड में आपको 27% डिक्लाइन हुआ था। इसी तरह एक्विटीज ले लें तो MSCI इमर्जिंग मार्केट्स जो कि 2020 में 11% डिक्लाइन था, ये 2017 में 7.8% इसमें इंक्रीज था। तो ये जो डेटा आपको शो कर रहा है, और ये ग्लोबल डेटा है, पाकिस्तान का नहीं है, ये एक चीज शो कर रहे हैं कि आपको एक प्रायर नहीं पता कि कौन सी चीज आउट परफॉर्म करेगी और इसमें वॉलेटिलिटी होगी। इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डाइवर्सिफाई अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस। पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान में भी जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ तो उनका एक नोशन है कि रियल एस्टेट तो सिर्फ ऊपर ही जाता है। ये नोशन गलत है। ये नोशन गलत इसलिए, आप डेटा देखें ज़मीन.com का, तो ये ज़मीन.com का डेटा आपको शो करता है कि इवन इन पाकिस्तान रियल एस्टेट इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद has gone down as well as gone up, of course, but it also goes down in short periods. So from an asset allocation perspective, you need to diversify. और यही गोल्डन रूल है जिसको दुनिया के एक्सपर्ट्स ने भी इसके बारे में बात की गई है और रेकमेंड किया है। बेंजामिन ग्राहम जो कि वॉरेन बफेट के गुरु समझे जाते हैं, जिन्होंने बुक लिखी हुई है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो भी डाइवर्सिफिकेशन रेकमेंड करते हैं। रे डालियो जो कि आजकल बड़े मशहूर है, बड़ा कोट किए जाते हैं, उन्होंने बुक लिखी है रिसेंटली विच इज द बेस्ट सेलर, एंड ही आल्सो सेज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन हैव इज अ गुड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन मिक्स। So this is a fundamental point which I want to tell you guys कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले आप सोचें कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप बुनियाद रखें कि आपने एथिक्स और ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना। फिर आप जब अपने मनी को एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखें कि डाइवर्सिफाई करें अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस। इवन विद इन स्टॉक्स यू शुड डाइवर्सिफाई बिकॉज nobody knows for a fact how things will look in the future, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को ही है। तो मगर दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एंड मेक दिस एज अ प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग। नाउ PSX इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर डाइवर्सिफिकेशन। द रीजन व्हाई इट्स ग्रेट, मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने अपने करियर में रशिया में भी इन्वेस्ट किया है, पोलैंड में भी इन्वेस्ट किया है, जर्मनी में भी इन्वेस्ट किया है, मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज से लेकर अफ्रीका तक मैंने इन्वेस्टमेंट की है। ज्यादातर एक्सचेंजेस जो हैं वो बड़ी ही कॉन्सेंट्रेटेड है। जिस तरह ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स में बैंक्स 60 to 70% ऑफ एसेट क्लास होते हैं। कुछ मार्केट्स में सऊदी अरेबिया की एग्जांपल देख ले कि सऊदी अरामको इज अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडेक्स नाउ, और बाकी जो केमिकल्स इन सऊदी अरामको एंड देन बैंक्स आर द थ्री सेक्टर्स व्हिच डोमिनेट दैट मार्केट। रशिया में चले जाए तो अगेन मेटल एंड माइनिंग इज मैसिव ओवर देयर। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, द रीजन व्हाई आई लाइक इट एंड द रीजन व्हाई one of the reasons which I thought was a massive selling point of Pakistani stock market, why I left my career in the UK to do this in Pakistan, was that it's a very diversified market. 500 odd companies are listed across various asset classes. Banks, oil and gas, cement, fertilizers, power, ये सारी बातें आपको पता है। मगर दो चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि PSX has proven to be uncorrelated with other asset classes. मेरिल लिंच ने 2005 में एक रिपोर्ट पब्लिश की और उन्होंने उसमें लिखा कि पाकिस्तान के मार्केट का वन ऑफ द टॉप सेलिंग पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की मार्केट दुनिया की मार्केट से कम कोरिलेशन है इसकी। और कोरिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कोरिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले पॉइंट बोला था, डाइवर्सिफिकेशन। कोरिलेशन का मतलब ये है कि जब दुनिया की मार्केट नीचे जा रही होती है तो पाकिस्तान मार्केट हो सकता है ऊपर जा रही हो सकता है फ्लैट हो, उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है दूसरी मार्केट्स के साथ। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी मार्केट डाइवर्सिफाइड है। अगर हमारी मार्केट में 70% ऑयल एंड गैस होता तो ये डाइवर्सिफिकेशन यकीनन खत्म हो जाती। इस तरह जब आप देखें दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही होती है तो ब्राजील की मार्केट ऊपर जाती है, रशिया की मार्केट ऊपर जाती है, मिडिल ईस्ट की मार्केट ऊपर जाती है। मगर जब ऑयल ऊपर जा रहा होता है तो इंडिया की मार्केट नीचे जाती है, चाइना की मार्केट नीचे जाती है, क्योंकि दीज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड विद ऑयल प्राइसेस। Pakistan's good thing is that Pakistan is a diversified stock market, जिसमें FMCG से लेकर कोलगेट, पाम ऑलिव, नेस्ले, पाक टोबैको से लेकर सीमेंट्स और टेक सिस्टम्स, TRG जैसी कंपनी भी आपको मिलती है। So it's a very strong attraction of Pakistani stock market. And lastly, diversification of investing in stocks helps you against the declining interest rate. I was talking to my father
जैसा मैंने बोला कि he was in the academia, he was a professor of physics, and after retirement he put his money in national savings, and national savings में अब return उनका कम होके 7 से 8% पे हो गया है. और it's important for him to diversify because अगर inflation खासतौर पे उनकी inflation अगर 10% से ऊपर से बढ़ रही है, तो अगर वो diversify नहीं करते और 7% का return लेते हैं, तो उनकी पैसे की value कम होती जा रही है. So it's important that stocks give you that kind of diversification. Now moving to which stocks, and I know, a lot of the people on this call would be more specific, want to be more specific. Magar I think it's important to understand the big picture, and it's very very important because specific तो आपको बाकी सबसे भी मिल जाते हैं. Specifics तो आपको in fact थोड़ा ज़्यादा ही मिलते हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है ethics और गवर्नेंस का. और इसलिए मैं आपको ये एहसास देना चाहता हूँ, ये पॉइंट देना चाहता हूँ कि you have to consider and learn about the rules of investing. Now, the first critical rule is discipline and long-term focus. ये चार्ट है, ये कैपिटल जो कि one of the top 5 asset managers in the world है, उन्होंने ये चार्ट पब्लिश किया है. This is MSCI World Index. और ये आप देख रहे हैं इसकी मंथली परफॉर्मेंस. मंथली परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो आप इसको अगर प्रिडिक्ट करना चाहेंगे तो कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. अगर आप मुझसे पूछेंगे कल मार्केट कैसी होगी, जो लोग पूछते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, मैं नहीं बता सकता आपको, मैं भी नहीं बता सकता, और मेरे ख्याल में कोई भी आपको बता सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी इज very very hard thing to predict in the short term. This is not just true for Pakistan, this is true globally. So when you get that tips, and I know it's easy to get that tips, question that do you think that this guy, आप सोचे कि क्या जो बंदा आपको टिप दे रहा है उसको वाकई पता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या उसने लाखों करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट से बना लिए हैं? क्योंकि अगर उसने खुद बनाने, अगर वो आपको बता रहा है तो आपको क्यों बता रहा है, आप उसको क्या फायदा हो रहा है आपको बताने से? It's very very difficult, if not impossible, to predict short-term movement, but most people get bogged down with this. They look at this kind of volatility and they forget this. This is the long-term view of the same chart. This is MSCI all country index, and this is the yearly return. और पहले जो आपने ग्राफ देखा था वो मंथली रिटर्न था. मंथली रिटर्न की प्रेडिक्शन की वजह से, आई डेली फोरकास्टिंग करने की और डेली पोजीशन लेने की वजह से लोग इस चीज को मिस कर देते हैं. So these are both the charts side by side of MSCI World Index, and left side monthly volatility, daily volatility, which is what most of people want to know, but unfortunately nobody knows the answer. But what we can know and what we can learn and what we can predict is the thing on the right side, which is the long-term performance, because that's driven by the company's performance. So my fundamental rule number 1 of investing is take a long-term view, because it is never a good time to speculate. This is a quote from Mark Twain, and he's a famous writer. He's not an investor, but I thought that the quote was pretty good. वो कहता है कि October is one of the particularly dangerous months to speculate in stocks, and the others are July, January, September, April, November, May, March, June, December. यानी कि speculate करने के लिए कोई भी time अच्छा नहीं है, and it's very true. So coming to Pakistan, I know the stock market had very strong rally over the last 12 days. It's up 35% since March, and that's why interest इन्वेस्टर्स का एकदम बहुत बढ़ गया है. हमें भी बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही हैं, हर बंदा स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं. मगर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द लॉन्ग टर्म, very important to remember diversification, very important to remember asset allocation, and extremely important to remember ethics and trust. So the index is up 35% since March. It's up 3.8%. किसी ने अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया पिछले 10 सालों में तो 17% एनुअलाइज रिटर्न है 10 सालों का, और 19% रिटर्न है पिछले 20 सालों का, और annualized it's up 38%. So if you look at this chart and if you don't scribble on it, it shows one thing. The thing which it shows is that there is volatility. जिस तरह पिछला मैंने आपको चार्ट दिखाया था जिसमें वर्ल्ड इंडेक्स से आपको नजर आ रहा था कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है, मगर लॉन्ग टर्म इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन अप. पाकिस्तान भी कोई मुख्तलिफ नहीं है दुनिया के इंडेक्स में. तो अगर आप देखें 2007 में से डिक्लाइन हुआ मार्केट का 2008 तक, मगर उसके बाद 5000 के लेवल से मार्केट गई टू 55,000 लेवल. सो 11 टाइम्स इंक्रीज. दरमियान में इधर भी डिक्लाइन आया
और उसके बाद फिर it broke that level, and again it has gone down. Magar, what history tells us is that if the underlying corporate earnings are growing, the stock market will go back up. So it's important to learn from history, and it's important to learn about which companies are you investing. This पे हम आगे आएंगे इस बात पर. Let me look at. I have 10 minutes, and then we will go for Q&A. So the second rule of investing is learn. Learn and invest in yourself. Invest in your knowledge. Invest in learning about the companies. आप सीखें कि जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका सिर्फ नाम सुन के इन्वेस्ट ना करें, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में सीखिए, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखें. CFA curriculum is a great program. We have made a online course on it, which is for free. It's on kasb.teachable.com. 2000 से ज़्यादा लोग इस वक्त registered है उस course में. It's a free master class taught by 12 experts in finance from the US to Hong Kong. CFA का curriculum वैसे बहुत अच्छा है. PSX has a lot of good resources on its material. All brokerage houses publish a lot of research. Read, and most importantly, thanks to PSX and the work which they're doing, सारी companies के websites पर उनके annual report, उनकी presentation, उनके historical numbers पड़े हुए हैं. PSX की website जो कि बहुत अच्छा resource है, इसमें DPS के अंदर you can find all of these resources. So when you're investing, and now there are 133 of you who are on this call, it's important that when you're investing, do the research on the companies, do the research on and try to find good companies. And this is the kind of work which we do, and which some of the work which I will share with you. Okay, we try to look for companies which are good companies, which are, and we try to look from the long term. But I confess that we don't have visibility of predicting next day or the day after tomorrow, and nobody else does as well. So it's very, very important that take a long-term view, look from an asset allocation perspective, think about trust, and talk to people who are trustworthy. But most importantly, invest in yourself. अपने आप के अंदर invest करें. So one theme which is very dear to me, and I think which will drive the asset prices in Pakistan and create shareholder value for investors, is finding companies which are inherently good companies. There's a big मुझसे बोला गया था रायदा ने, और जो इस वेबिनार का टॉपिक भी है, कि कौन सी कंपनीज है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान में, कौन सी 10 कंपनीज है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. So coming to that topic, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जिन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये वो कंपनीज है जिनका एक गुड सोशल पर्पस भी होना चाहिए. सोशल पर्पस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, तो इवेंचुअली वो उस कंपनी की अर्निंग्स उससे इफेक्ट हो जाएंगी. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, टोबैको कंपनी है. एक टोबैको कंपनी है जिसका प्रोडक्ट की वजह से लोगों को फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है. बेशक वो कंपनी आज जितना मर्जी प्रॉफिट बनाती रहे, मगर फ्यूचर में जब उसकी वजह से लोगों की हेल्थ पे बुरा इफेक्ट आएगा, तो इवेंचुअली दैट विल स्टार्ट, पीपल विल स्टार्ट, गवर्नमेंट स्टार्ट टू स्टेप इन एंड से कि ये प्रोडक्ट पे टैक्स और लगाओ, इस प्रोडक्ट को बंद करो, और उसकी वजह से उसके प्रॉफिट्स फ्यूचर में कम होते रहेंगे. एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सीमेंट. अगर एक सीमेंट कंपनी है जिससे वजह से बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है और वो इन्वेस्ट नहीं कर रही अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो इवेंचुअली उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएगी, कोर्ट्स आ जाएंगे, कहेंगे कि आप पे फाइन लग रहा है. अभी हाल ही में बैंकों में पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े कंप्लायंस के फाइन लगे हैं इसी वजह से. So for us, for me, as an investor in Pakistan and as an investor in other markets, when I look at good companies to invest in, one of the frameworks which I think is very important, which I think will impact how the stock prices move, is try to find companies which not only have good financial performance, but also which have good purpose, जिनका societal contribution है, जिसका environmental contribution है, जो अपने employees को fairly treat करते हैं, and who think beyond short-term profits. हमने इस पे एक recently report लिखी है ESG investment के ऊपर. इस वक्त ग्लोबली $30 ट्रिलियन के एसेट इस तरह का फ्रेमवर्क, जैसे ESG फ्रेमवर्क कहते हैं, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, उसको फॉलो कर रहा है. क्योंकि $30 ट्रिलियन इसको फॉलो कर रहे हैं, तो जब ये पैसा पाकिस्तान में आएगा, तो ये पैसा और आता है पैसा पाकिस्तान में, तो ये इन्वेस्टर्स स्क्रीन करेंगे उन कंपनीज को जिन कंपनीज की ESG परफॉर्मेंस अच्छी होगी.
तो जब ये पैसा उन कंपनीज में जाएगा जिनकी ESG परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो उन कंपनीज की स्टॉक प्राइसेस विल डू बेटर कंपेयर टू दोज कंपनीज जो ESG में अच्छा नहीं कर रही। और ये हिस्टोरिकल डेटा भी ये शो कर रहा है। ये ऊपर वाला चार्ट जो है ये MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स का है, पिछले 5 सालों का, पिछले 15 सालों का, और दूसरा वाला है पिछले 12 महीने का। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये जो सिल्वर लाइन है, दिस इज MSCI ESG कंपनीज, ये वो कंपनीज है जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पे बेहतर परफॉर्म करती है। इनकी स्टॉक प्राइसेस भी आउट परफॉर्म की है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी ऐसा होगा। इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है एक्टिव इन्वेस्टर्स नहीं है, they have been selling out, बट जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स, ओवरसीज इन्वेस्टर्स की ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, they will screen for companies which have good ESG. So not only is it important for you guys, because I think good ESG determines good financial performance and it drives equity performance. But it will also it's also a good investment because global investor capital will follow that rules. So पाकिस्तान में हमने इस पे रिपोर्ट लिखी, हमने UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो किया। उसको करते हुए हमने ये 6 कंपनीज आइडेंटिफाई की जिनका सोशल पर्पस it's a part of their DNA and it's a part of the business which they think of. Nestle comes the strongest on it. Nestle, I know it's an illiquid stock, but packages is a good way of owning Nestle. I think packages, की जो Nestle की shareholding value है, जो कि packages own 8% of Nestle, but that value alone is 100% of packages' market cap. So that's number 1. Number 2 on that list was Engro. Engro Corp, again, Dow Hercules could be a way of holding that, which is number 3. Engro Fertilizer, all of Engro Group, actually, you could see from their practices, their business, their management approach, that they put a very high value on doing good to the society, doing good to their employees, doing good to their companies. And that's why I think fundamentally they are very, very good companies to invest in. And again, I'm talking about long term, and I'm not talking about next week's performance. But these are good companies to own. Fauji Fertilizer, again, it came in that list primarily because the product which they make has a good social importance. Pakistan is an agrarian country, और हमें agriculture पे focus करना ही पड़ेगा, और ज़्यादा ही करना पड़ेगा future में, क्योंकि food availability will be a main thing. Curbing, solving hunger and reducing poverty के लिए agriculture yields को improve करना बहुत important है. ये company उसके लिए काम करती है, और UN के गोल में भी ये 2 points आते हैं. So I think this sector is a good sector to be involved in. Habib Bank, we included it, although despite of the fact that they got the fine for compliance, because I thought within the banks, it's the bank which is lending the most to agriculture, the most to power, the most to microfinance. So I thought that they have a social purpose. Of course, they are owned by Aga Khan Foundation, जो high impact funds का social purpose है. So that's why it made the list. And lastly, Searle. I think COVID time में फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और खासतौर पर वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि इन्वेस्ट करती है R&D में, जो कि उनमें उनकी वैल्यू जो है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि दे हैव अ सोशल कंट्रीब्यूशन, दे आर प्लेइंग अ बिग रोल इन सोशल कंट्रीब्यूशन, एंड आई थिंक 12 months down these companies will be the winners, and I think 5 years down, I think this sample is the best sample to own for a 5-year horizon. There's some more detail. As I said, कि हमने recently इस पे एक बहुत detailed report भी लिखी है, जो कि हमारी website ksb.blog पर भी है और ksb.com पर भी मिल जाएगी आपको. I won't go in the details of the stocks because I think you can read about it. It's better if you read about it rather than relying on me. As I said, invest in yourself. But all of this information is available. PSX की website में भी इन companies के annual report और ये सारी information available है. So these are the companies, and if you need more information, so KSB's team is available for you. We have a team of research analysts, sales guys, who can give you more detailed views on the stocks. But from my perspective, to recap, always focus on ethics, trust, because this is fundamental for our contract. It's fundamental for why we are talking, why Raida called me, and why you go to this exchange. The number 2 is think about diversification, think about some asset. It's very important. आपके लिए savings बहुत important है, क्योंकि पाकिस्तान में social security net नहीं है.
तो अपनी सेविंग्स में, अपनी इनकम में से सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इकोनॉमी की अब परफॉर्मेंस है, अब पक्की नौकरियां नहीं होती, अगर हो भी तो जो पेंशन सेविंग्स मिलती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि खर्चे को पूरे कर सके। तो सेव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स इज अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, लुक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, डू नॉट इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपका पैसा नहीं बनेगा, कोई आपको इस तरह की एडवाइस नहीं दे सकता और किसी का नहीं बन सकता दुनिया में। और लास्टली, जब आप डाइवर्सिफाई करके एक लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं, तो थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन गुड कंपनीज विच हैव अ गुड सोशल कॉर्पोरेट पर्पस। और मैंने आपको 6 कंपनीज बताई जो कि मेरे ख्याल में ये सोशल कॉर्पोरेट पर्पस को मीट करती है। सो विद दैट, ओवर टू यू रायदा। अगर जो क्वेश्चंस है तो प्लीज राइट इट डाउन। रायदा, यू कैन प्लीज read some questions and short list and tell me the questions. Thank you. Thanks a lot, Ali Farid. I would begin the questions. सबसे पहला एक क्वेश्चन, एक कमेंट था, उस पे वो आपका कमेंट मांग रहे हैं. ही इज सेइंग दैट PSX is skewed by heavy weights like banks and oil. What is your comment on it? Would you like to comment? It is, and so it's not like it's, if you look at the overall thing, so I don't remember the exact number right now, so I don't want to give the number, but I think from what I remember that cement also has a decent weight, and these are cyclical stocks. So if if you look at their peak multiples, when autos and cements were at their peak levels, I think their weight on the index, the cyclicals, were also probably around 20-25%. So yes, it is skewed, as in it is heavy, but it's not skewed. मैं जब skew देखता हूँ तो मैं देखता हूँ US market, जिसमें इस वक्त tech alone, only tech is around 45-50% of the market. मैं देखता हूँ Brazil, जिसमें metal mining and oil and gas is almost 75-80% of the market. So from if और मैं अपनी एग्जांपल इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इमर्जिंग मार्केट को जो इन्वेस्टर्स मार्केट को देख रहे हैं वो इन्हीं नंबर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं. उस कंपैरिजन में पाकिस्तान के मार्केट इज अ वेल डिवर्सिफाइड मार्केट. इट्स वेरी कॉमन इन इमर्जिंग मार्केट्स टू हैव बैंक्स एज अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडेक्स, जस्ट बिकॉज बैंक्स जो हैं वो आपकी इकोनॉमी को पूरे, दे रिफ्लेक्ट योर ओवरऑल इकोनॉमी. जब इकोनॉमी अच्छी करती है तो बैंक्स अच्छा करते हैं, जब इकोनॉमी श्रिंक करती है तो बैंक्स बुरा करते हैं. इसलिए ऑलमोस्ट इन ऑल दीज मार्केट्स बैंक्स हैव अ बिग स्टेक. मगर मैं आपकी बात से, इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में टेक शुड हैव अ ग्रेटर वेट, न्यू इंडस्ट्रीज शुड हैव अ ग्रेटर वेट. एंड मेरी रायदा से भी डिस्कशन इस बात पे हुई है और PSX की बाकी टीम के साथ भी डिस्कशन हुई है. सो आई नो दैट PSX इज वेरी कीन टू अलाउ एंड encourage new companies to come and list in the market. अभी जो IPO हुआ है रिसेंटली, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, वो ऑयल एंड गैस और टैंक्स में से नहीं है. मेरे ख्याल में TPA और भी जो पाइपलाइन में कंपनीज जिनके बारे में पढ़ रहा हूँ वो भी ऑयल एंड गैस और टैंक्स में से नहीं है. सो यू आर स्पॉट ऑन दैट अभी इंडेक्स में हैवी है, मगर I know that PSX is doing taking an active role in encouraging new companies from new sectors to come and list. Yeah, this I would add to this, Ali, that right now in this current year we have introduced a new board by the name of GEM board for companies who wish to enlist. This is actually for growth enterprise markets. The new entities or the upcoming entities to come and this is to encourage these entities to come and list on the exchange. Thank you for bringing that up. There is another comment. A few weeks back, stock market was heavily jolted by fall in oil prices. What is your comment on that? Would you like to comment on the fall in the impact of the fall in oil prices on the stock exchange? जी बिल्कुल. ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत एक्सट्रीम रही है, नेगेटिव प्राइसेस में चला गया जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ. ऑयल इज अ कमोडिटी बाय डेफिनेशन वॉलेटाइल तो होती है, ये तो बाय डेफिनेशन वो है. मगर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो ऑयल की रीसेंट वॉलेटिलिटी हमने देखी वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एंड नोबडी, आई डोंट नो मेनी पीपल हु प्रेडिक्टेड दैट. और जाहिर बात है वो इसलिए भी हुई कि कोविड की वजह से जो ग्रेट लॉकडाउन हो गया, दुनिया बंद हो गई, उसकी एयरलाइन और एविएशन
सबसे बड़ा यूज होता है ऑयल का एयरलाइन एविएशन में, और ये सेक्टर बिल्कुल बंद हो गया कोविड की वजह से, जिसकी वजह से ऑयल डिमांड कम हो गई, स्टोरेज फुल हो गए, और जो प्रोड्यूसर्स थे उनके जो प्रोड्यूस कर रहे थे उनके पास स्टोर करने की जगह ही नहीं थी। तो जिसकी वजह से ऑयल का ये सिचुएशन हो गई कि जिनके पास ऑयल था वो कह रहे थे हम आपको पैसे देंगे, आप ऑयल हमसे ले लो और स्टोर कर लो। तो ये एक बड़ी यूनिक टाइम था दुनिया की इकोनॉमी पे, और हमने देखा कि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए रहा, और उसके बाद ऑयल प्राइसेस काफी हद तक रिकवर हो गई। मेरा अपना व्यू इस पे जो मैंने लोगों को पढ़ा है वो ये है कि आई थिंक दैट ऑयल प्राइसेस विल कंटिन्यू टू गो अप एज द इकोनॉमी ओपन्स अप। जब एयरलाइन खासतौर पे जब खुलेंगी तो ऑयल प्राइसेस शुड गो अप प्योरली बिकॉज द ग्लोबल इकोनॉमी विल कम बैक, और उस टाइम पे ऑयल पे आप फिर से एक स्पाइक देख सकते हैं, क्योंकि बॉटल नेक्स क्रिएट हो गए। ऑयल की यूनिक बात यह है कि ऑयल इज ऑलवेज प्राइस एट द मार्जिनल लेवल, आखिरी जो ऑयल का उस पे वो, इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मगर मैं आपको आई विल एंड विद दिस दैट in 2008 Goldman Sachs published a very famous report in which they predicted that oil will go to $200, और उस वक्त 120 130 पे चला गया, तो उन्होंने कहा 200 पे चला जाएगा, और उसके बाद वो 40 या 30 पे चला गया। So again, nobody can predict these things in short term, but I do think that oil prices will go up. Acha, the next question, which I feel is very interesting and relates to your session, it is it necessary to see the balance sheet of a company in which we are going to invest? One thing more, which framework should we keep in mind while investing? इसी के साथ साथ एक और question भी, एक और साहब का question है Facebook पे, kindly tell us which points should we keep in view during the study of a company's financial reports? These are both great. Thank you. They are both great questions. Financial statements में दो statements सबसे important होती है, एक बैलेंस शीट और दूसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट काउंटर इंट्यूटिवली सबसे लेस इंपॉर्टेंट होती है इन तीनों में से। तो बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट क्या चीज है? बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट है कंपनी का कैश, नेट कैश, क्योंकि अगर कोविड का टाइम देखें, लॉकडाउन आया, ज्यादातर कंपनी दुनिया भर में, ज्यादातर एसएमईज के पास सिर्फ 6 से 8 हफ्ते के लिए पैसे होते हैं नेट, उनके बाकी पैसे जो होते हैं वर्किंग कैपिटल में फंसे होते हैं, तो उसी को वो रिसाइकिल कर रहे होते हैं। तो जिन कोविड की वजह से जिन कंपनीज के पास बैलेंस शीट में पैसे थे वो कंपनी सर्वाइव कर गई, जिनके पास नहीं थे वो कंपनीज बंद हो गई। और ये कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जिस तरह डेवलम्स, कॉफी की चेन है यहाँ पे कार्लूसियो, तो बड़े बड़े ब्रांड हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों में बंद हुए क्योंकि उनकी बैलेंस शीट में कैश जो था वो खत्म हो गया। तो बैलेंस शीट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैश। इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखना वो है फ्री कैश फ्लो जनरेशन। कंपनीज अपने अकाउंटिंग, अपने रेवेन्यूज पे तो प्ले अराउंड कर सकती है, कंपनीज के पास बहुत ज्यादा लीवे होते हैं जब अपने वो रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर, मगर कैश के ऊपर उनके पास लीवे कम होते हैं। तो जब आप इन्वेस्ट करें, लुक एट द फ्री कैश फ्लो व्हिच इज द net cash flow available to a company after they pay for the working capital and the interest, और ये जो कैश और एंड केपेक्स एक्सपेंशन के लिए ये जो पैसा है ये उस कंपनी के पास जा रहा होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है कंपनी को देखने के लिए। ना दूसरा क्वेश्चन जो था आपका कि और क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, मेरे ख्याल में फाइनेंशियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनीज की गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखना, क्योंकि अगर आप एक कंपनी पर ट्रस्ट ही नहीं करते तो, और उनकी मैनेजमेंट पर ट्रस्ट भरोसा नहीं कर सकते, तो उनके नंबर जो मर्जी प्रेडिक्ट करे आपको, वो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले पीछे चार्ट्स दिखाया था, एनरॉन का, बायर कार्ड का, सत्यम था, लुकन कॉफी का, ये सारी वो कंपनीज थी जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थे वो फर्ज थे क्योंकि वो फ्रॉड कर रहे थे, अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे थे। तो सबसे पहले जब चीज़ आप देखें जब कंपनी में इन्वेस्ट करें कि इज द मैनेजमेंट क्रेडिबल, is the management trustworthy, and then you start looking at the numbers. When you look at the numbers, start with the balance sheet, look at the cash flow statement, then go in the income statement. And but इसलिए मैंने ये presentation का start भी इस बात से किया था कि trust is the fundamental essence of capital markets. अच्छा, there are a couple of questions जो कि index से related हैं. Does PSX allow index buying as the index allows diversification along the long range of stocks?
इसके अलावा एक साहब ने पूछा है कि what is your view on ETFs? So index funds and ETFs, your opinion on that? So this is pertaining to index. So ये मैंने 2-3 एक साथ questions आपको address कर दिए हैं. Thank you for clubbing them, Raida. And ETF में तो मेरे से ज़्यादा बेहतर आप हैं बात करने के लिए, क्योंकि PSX ने recently पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ETF लॉन्च किया है. So I think you can tell more about that. So the answer is yes, there is an ETF. Yes. Recently been launched, but Raida, would be great if you can tell something about the ETF which has been launched. Yeah, regarding the ETFs, we have right now 2 major ETFs available on the stock exchange. One is UBL ETF and the other is NITG ETF, जो कि NIT जो asset management company उन्होंने introduce किया. Both the ETFs are focusing on companies on the KASB 100 index. UBL के holding में around 9 stocks हैं, whereas NIT has about 11 stocks. Which focus on the blue chip stocks available within the PSX index. इनकी सारी details जो है हमारे data portal पे ETF के page पे available है. You can actually the best thing is you can enter into the ETF with an amount as low as 10,000 or 5,000, and if 10,000, if you buy 10,000 ka ETF, you get an access. Your portfolio will consist of 9, or if in the case of UBL, and 11 in the case of NIT. In that situation, आपको एक diversification मिल जाती है. You add more money into your holding, you invest over time. This is an ideal entry method or tool to come into the stock market. Over time, जब आपको market समझ आने लगी, you can open up your ETF and actually own these 9 or 11 stocks, and then decide कि मैंने कौन से further stocks को build करना है and कौन सो को let go करना है. But it is an excellent entry point to understand the market, to have diversification in your portfolio and at a smaller level. So thank you for that, Raida. And I will just add one thing that ETF, as Raida said, is a great way of diversification. It's a simple way of investing. It's a cheap way of investing. But I will also request Raida and PSX to make an ETF which is ESG compliant. जैसा मैंने बोला कि ESG good. It's important to screen for companies which are good quality company and which have a good social purpose. And I do think that those set of companies which perform well on ESG should outperform the broader index. So that's an idea for you and suggestion for you for. Great. Okay, then there are certain questions which are asking you, where do you see the index going forward? Do you see it going more than 40,000? Generally, इसके ऊपर एक broader multiple queries हैं. उसके बाद फिर 3 months performance वगैरह के ऊपर कुछ queries हैं. क्या आप उसके ऊपर कुछ comment करना चाहेंगे? क्या हम expect करें कि market अब declining में आएगी या अब continue करेगी? So those kind of questions are coming. इसके बाद फिर मैं आपसे sector wise और specific questions पूछूंगी. Thank you. तो पहली बात उसमें for more details on stocks and companies and market, I would recommend people to talk to our research team, Arsalan, Sumro, Yusuf. So, if you go to kasb.com website, you can reach out to these people. They can give you more specific information on their views, which are published views on all of the topics the questions which you have asked. Personally, my view is that I think it's a published view that we do think that the market will go up. It will end the year higher than 40,000. But it's difficult for me to give a 3 months forecast. I don't have that. But again, you can talk to my colleagues who might have a more specific answer. So Arsalan, Sumro, Hamad, Aman in sales. But I will say this, that generally, why do I think that market will go up? मैं क्यों समझता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी? इसलिए क्योंकि हमारी फोरकास्ट ये है कि पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो ग्रो करेगा, और पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ हमारी जो है वो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1.1 to 2% ग्रोथ. जीडीपी ग्रोथ ये रियल जीडीपी ग्रोथ होती है. इस पे आप इन्फ्लेशन ऐड करें, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 6 to 7%. So that means that nominal growth is around 9 to 10%. GDP growth क्या है? GDP is the combination of the earnings of all the companies in Pakistan, not just the listed one, but all the companies in Pakistan.
जिसका मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं कि एक कंट्री की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9 से 10% है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि इस कंट्री की जो कंपनीज है उनके प्रॉफिट्स 9 से 10% से बढ़ेंगे। तो अगर पाकिस्तानी कंपनीज के प्रॉफिट्स इस साल 10% से बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को भी इतना तक बढ़ना चाहिए, अनलेस मार्केट कंप्रेसेस, बिकॉज मल्टीपल कंप्रेस हो जाए, जो कि पाकिस्तान में हुए। पिछले 2 सालों में मल्टीपल कंप्रेस हो रहे थे, हमारी जीडीपी ग्रोथ भी पिछले साल नेगेटिव हुई, मगर फ्यूचर में इस वक्त क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुए हुए हैं, इस वक्त दुनिया भर की मार्केट्स के मल्टीपल भी बढ़ रहे हैं और उनकी अर्निंग्स ग्रोथ पे तो क्वेश्चन मार्क है, मगर मल्टीपल्स बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मार्केट का मल्टीपल भी बढ़ेगा और अर्निंग्स ग्रोथ भी होगी, इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मार्केट शुड एंड दिस ईयर अप 15% फ्रॉम जनवरी लेवल्स। Okay, there are a few more questions which जिसमें सीमेंट के स्टॉक्स के बारे में लोग आपके कमेंट्स मालूम करना चाह रहे हैं। CPEC, the impact of CPEC, which sectors and which stocks will CPEC projects have an impact on? कंस्ट्रक्शन पैकेज की कोई के क्या आपके नज़र में इम्पैक्ट है और रीट के बारे में आपके क्या comments है? So ये 4 construction, cement and CPEC से related areas हैं जो if you could cover them in this. Absolutely. Again, in terms of sector details, I would strongly recommend to talk to our cement analyst and our research team, and they can tell you a lot more about it. मेरा जो views है इसमें ये कि CPEC, if let's start with CPEC. So CPEC में हमने देखा कि पहले तो it was all about construction infrastructure, so power sector, highways. अब जो फेज है CPEC की उसमें we are talking about trade. This is a very very important phase and this phase का ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है हमारी कंपनीज पर और हमारी इकोनॉमी पर, और इस फेज के बारे में मार्केट ने अभी प्राइस इन करना नहीं सोचा। तो इस फेज में मेरे ख्याल में जो कंपनीज को फायदा होगा वो कंपनीज हैं जो ट्रेड कर सकती हैं, जो चाइना से ट्रेड को शिफ्ट कर सकती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर इंपोर्ट कर सकती है और चाइना इंपोर्ट कर सकती है। तो इसमें कंपनीज इन द टेक्सटाइल सेक्टर are important. I think Interloop can exploit that opportunity. I think FML can exploit that opportunity. I think the meat company which recently listed, the organic meat, can exploit that opportunity. So I think it's important from us, even from a CPEC perspective, to look at the trading, the exporters, and the companies in the manufacturing sector who can take some of the manufacturing capacity from China and move it to Pakistan. So I think this is important. मेरे ख्याल में चाइना से पाकिस्तान में टेक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं, कुछ और लिस्ट होंगी। So this is another sector. रायदा ने जेम मार्केट की बात की. I'm sure that some companies which will exploit that gem market and come to you to ask for investments will be companies who will be exploiting that investment from China. So keep an eye on that. The third question on cement in terms of construction package, it's trivial, so there's not much I can add beyond what is already written by so many people. So, of course, it's all in the public domain. The government has announced a construction package. Construction and housing is a big sector, focus area for the government. It's a pet project for Imran Khan. And so there should be a pickup whenever that happens. But from a government perspective, they are fully committed. They seem to be fully committed on it, and ball is rolling on it. So जो भी उन्होंने बातें की थी, उस पे शुरू में तो काफी क्रिटिसिज्म हुई कि डिले होता रहा है, और मगर ऐसा लगता है कि government is serious about building homes and they have announced this package, and this should lead to increase in construction and should help cement sector, or should help steel sector. Then we have seen those stocks go up as well. In particular stock advice, again, I will recommend that, talk to my sales team, Arsalan Sumro, Hamad Aman, and the others, or my research team. And if you go on ksb.blog, you should be able to find their views as well as their research on cement. But I know they're bullish on cement sector and they like stocks like Lucky, Maple, DG and others. But best to talk to them. अच्छा, हमारे पास multiple questions हैं related to specific stocks like Hescol के बारे में बताएं, या banks and oil exploration companies. I think you covered the bank and oil exploration companies in your explanation, but फिर भी कुछ लोग पूछ रहे हैं ऑर्गेनिक मीट कंपनी के आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस हैं. आई थिंक अगेन वी कैन सम इट अप बाय सेइंग कि यू शुड गेट इन टच विद द रिसर्च
units, because you can't recommend कि जी आप ये वाला stock लें. I don't know. What's your take on that, Ali? Absolutely, Raja. मैंने इसलिए presentation का start भी इसी चीज से किया था कि it's important. Two things which are important is trust, following ethics, rules, governance, and secondly is thinking about long term and not making promises which you don't have. So I will avoid. I can avoid. I can give you my personal opinion on those companies, but it's better that you talk to people who look at those sectors in detail, and that I'm not that person. So, but as I said, in my personal opinion, I gave you a few stocks which I think are good companies, which I think will outperform, and those were the 6 companies which I mentioned earlier. And I can go in some details on those stocks, but broadly beyond that, my colleagues are the experts. So, मैं expert नहीं हूँ, वो expert है. आप उनसे बात करें ksb.com or ksb.blog पर. Actually, related to the companies, there's this one question that the governance structure of companies in Pakistan have the way to manipulate or find loopholes to keep their reputation secure. How to unmask the facade? I think that goes back into the studying the balance sheet carefully. Ali, what do you say? Absolutely. जी आप काफी चीजों पे आप इनकम स्टेटमेंट पे मैं पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं दे रहा. मैंने आपको 4 यूरोपियन ग्लोबल कंपनी की एग्जांपल दी. एनरॉन दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड, वायाकार्ड जर्मनी का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड, लुकिन कॉफी अभी इसी हफ्ते का चाइनीज फ्रॉड, और सत्यम इंडिया का अकाउंटिंग फ्रॉड. इन सारे एग्जांपल्स में इन्होंने अपनी P&L को जो थी इनकम स्टेटमेंट को पे इन्होंने घपला किया था, मगर कैश फ्लो पे घपला करना बड़ा मुश्किल है. कैश फ्लो जो है ये वो मनी है जो आपके बैंक में एंड में आ रहा है. सो एज अ इन्वेस्टर व्हेन यू आर लुकिंग एट कंपनीज, लुक एट 3 थिंग्स प्लीज. First is look, do your due diligence on the management. If you are uncomfortable with the management, then don't invest, regardless of what the numbers show and regardless of what the stock price does. पाकिस्तान में कई कंपनीज है, मैं उनके स्टॉक प्राइस देखता हूँ, लोगों मुझसे पूछते हैं कि यार ये बहुत अच्छी कंपनी है, स्टॉक इतना बढ़ गया. मैं कहता हूँ नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द मैनेजमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द स्टॉक डज. So आप भी देख सकते हैं, मतलब it's these are easy things, but keep this as your primary focus area, that I will not invest in companies where I don't trust the management. And this could be your personal view. Stock market की beauty ये है कि हर moment के ऊपर there's a difference of opinion. जब कोई खरीद रहा होता है, कोई बेच रहा होता है, इसका मतलब जो खरीद रहा होता है उसके ख्याल में ऊपर जा रहा है, जो बेच रहा होता है उसके ख्याल में नीचे जा रहा है. ये स्टॉक मार्केट की ब्यूटी है, there's always a difference of opinion. So इसलिए आपका ओपिनियन और मेरा डिफरेंट ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकता है, मगर आप अपने ओपिनियन पे, if you don't like a management, don't invest in it. But when you're looking at the company, look at the cash flow statement, look at free cash flow generation, look at on the balance sheet how much cash the company has. These things typically is very difficult to hide those things. And also another thing you should look at is tax, how much tax the company gives, क्योंकि उस पे वो लाई नहीं करते, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता है. तो अगर आपको मिसमैच लग रहा है कि कंपनी बहुत प्रॉफिट बना रही है मगर टैक्स देती नहीं है, so then there's an issue in that. So that's a big red flag. There's a book called Fooling Some of the People All of the Times, David Eisenstein ki. I will highly recommend that book if you are interested in knowing more about accounting anomalies. We have one question that he's saying that, Ali, do you or your team cover PSX listed stock, and what's your view on it? और इसके अलावा इनका एक और क्वेश्चन भी है, दैट इज कि recent उसमें E&P company performances अच्छा नहीं, why do you see so many foreign outflows from PSX amid COVID recovery scenario? So overall stock exchange से क्या exit क्यों हुआ है? Why do you see that? And the other question was listed PSX stock को cover करते हैं क्या आप कि नहीं? बिल्कुल, great questions. पहले तो किसी ने चैट में बुक मांगी है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, Fooling Some of the People All of the Times. So it's a bestseller and it's a classic. So I'll highly recommend that. Now coming to the two great questions. Pehla, PSX. We don't cover PSX. We don't have a formal recommendation. So, but I do have an opinion on PSX. Of course, हम सबका PSX में opinion है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम ये बात कर रहे हैं और हम stock market में invest करते हैं. और so I certainly have an opinion, and my opinion is that if Raida, Farooq Khan, Nadir Rahman, and the new team of PSX, if they do well, then and they can reach out to you guys, they can reach out to companies. If they execute on the plans they have, then PSX should do well, because Pakistan
मैंने आपको पहले शुरू में बोला कि मैं लंदन में रहता हूँ, मैंने दुनिया की बड़ी-बड़ी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है और $10 बिलियन रेज़ किया है दुनिया की हर तरह की कंपनी के लिए। तो मैं छोड़ के पाकिस्तान इसलिए आया क्योंकि आई हैव believe that Pakistan stock market should do much better, and I think the returns on Pakistan should be superior than the returns on most of these markets. But it all depends on the management team of PSX and how they execute. And I have good faith, good feeling, and hope with the new management team of PSX. I think they are doing a great job. Now, moving to why foreign investors are selling, they have been selling since 2017. और उसके कई वजूहात है। एक तो पहले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में मसला था, वो चले मसले सारे होते रहे। कोविड के बाद से जो है सेलिंग इसलिए भी आ रही है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट फंड्स में से आउटफ्लोज हो रहे हैं। अगर आप ओवरऑल मार्केट्स देखें तो डेवलप्ड मार्केट स्पेशली यूएस की मार्केट हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। टेस्ला का स्टॉक इज अप 50% दिस ईयर। So there's almost like a bubble in the US market, and the reason why उसमें bubble है इसलिए क्योंकि US ने interest rates negative कर दी है। पाकिस्तान में मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान में मैंने अपने वाले साहब की एग्जांपल दी कि अब उनको 7% रिटर्न मिल रहा है नेशनल सेविंग्स में, तो वो कह रहे हैं कि मैं किसी और जगह स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। यूएस में नेगेटिव रिटर्न है, आप अगर बैंक में पैसा डालते हैं आपको पैसे घटते हैं, तो इसलिए वो सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट में जा रहा है, जिसलिए यूएस की मार्केट ऊपर जा रही है। उसकी वजह से जो फंड बाकी फंड्स को पैसा देते हैं वो पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकाल कर, फ्रंटियर मार्केट से निकाल कर डेवलप्ड मार्केट्स को दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन फंड्स का साइज कम होता जा रहा है और उनको सेल करना पड़ रहा है। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान में डेट के ऊपर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी आई पिछले दिनों, जब ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बातें शुरू हुई, जिसकी वजह से हमने देखा है कि इफ यू रिमेंबर एक्सचेंज रेट पे डिप्रिसिएशन आ रहा, और उसके बाद से कदर स्टेबिलिटी आई है पिछले 2 हफ्ते से, मगर उससे पहले एक्सचेंज रेट अगेन वेंट अप बाय 5% इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो एक्सचेंज रेट इज द बिगेस्ट डिटरेंट फॉर अ फॉरेन इन्वेस्टर, क्योंकि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को डॉलर में रिटर्न को मेजर करना है, और अगर उसको लगता है कि पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट करेगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। Over to you, Radha. I think I don't see Radha. I think her line might have dropped. There's a question that is there any way to invest in US stocks? No, there isn't. From हमारी ऐप है ktrade.pk, जिससे थ्रू आप पाकिस्तानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आप अमेरिका से पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान में जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात है, और ये आप SECP से और रायदा से कंफर्म, PSX से कंफर्म कर सकते हैं, पाकिस्तानी रूल्स डोंट अलाउ पाकिस्तानीज टू इन्वेस्ट एंड आउट ओवरसीज। सो जो FX ब्रोकर्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में दे आर नॉट लाइसेंस्ड टू पाकिस्तान, व्हिच मींस दैट दे आर ऑपरेटिंग इलीगली। So it's something which I want to warn people that, you know, when you look at platforms such as eToro or IronFX, and there are a lot of these unlicensed platforms operating illegally in Pakistan, you should go on the website. They will have a disclaimer, because European rules disclaimer डाला है जिसमें लिखा हुआ है कि 80 to 90% of people lose money on those platforms. So be very careful in those platforms. They are not legit, and they are there to 80 to 90% people lose money on that, but they are not even legit in Pakistan. That's correct. I'll add to that. A lot of this, there's no proper regulatory framework in Pakistan to support these kind of offerings or trading international level के ऊपर. So that you, in case you lose money also, there's no place to go, no complainer which can protect or secure your investment. So that's a very, and फिर again एक और angle आ जाता है वो funds. You don't know AML के अंदर, you don't know where this money is going. A lot of it's being राजा आपकी आवाज टूट रही है, राजा आपकी आवाज काफी डिस्टॉर्ट हो रही है। So we really know money is going also.
एक और इधर Raida, about technical analysis. This is a possible decision. जी, I think उनकी line drop हो गई, मगर her point was correct and point was very valid that FX brokers जो हैं, most of them, in fact, all of them are illegally operating in Pakistan, and I would consider them to be a fraud. And again, when you are looking at it, and I'm sure a lot of people of you do it because Pakistan में काफी लोग वो use करते हैं, उनकी website पर जाकर और उनके regulator की जाकर उनकी वो disclaimer जरूर देखेंगे कि कितने % people lose money on those platforms. ESMA, which is the European regulator, ने पिछले 2 साल पे इस पूरे सेक्टर पे बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है. उस क्रैकडाउन के बाद ये कंपनीज जो है यूरोप को छोड़कर एशिया जा रही हैं जहां पे इन पे रेगुलेशन नहीं है. तो इसकी वजह से ये कंपनी पाकिस्तान आई हुई है. इसकी वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इंट्रोडक्टरी ब्रोकर्स ढूंढे हुए हैं जो इनके लिए बंदे ढूंढते हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पे लाते हैं. मगर these guys often operate illegally and you should look at the platform. There's a question about tea on organic meat company. Organic meat company, our colleagues published a report on it. Yusuf published a report on it. He liked it and recommended it at the IPO. I think his price was 20, which is where the IPO came. मेरा अपना उस पर ओपिनियन ये है, तो डिटेल के लिए आप यूसुफ की रिपोर्ट देख सकते हैं. मेरा पर्सनल ओपिनियन ऑर्गेनिक मीट कंपनी पे ये है कि आई थिंक दे कैन बी अ बेनिफिशियरी ऑफ सीपेक by with trade to China. If they can get proper approvals on that, then that can open up a massive market for them. And that's a use case, that's a scenario which is not modeled in. So that's a massive potential for that company. Uske beyond, mera view ye hai ki I personally, we like entrepreneurs. I like entrepreneurs. I like people who want to do business, who want to do business in Pakistan. मैंने खुद अपनी एग्जांपल दी कि मैं यूके में जॉब को छोड़कर पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है. KSB ने over the last 50 years investment kiya Pakistan mein. So I like and want to back people who are entrepreneurs, and Organic Meat Company is a fabulous story of entrepreneurs who are building a business in Pakistan, who have been successful in importing and exporting their product globally and meeting the global standards. And I think the big potential for them is China. If they get approval over there, the stock should do well. But my colleagues like it at 20 rupees. Raida, are you back? Yeah, I think that's more or less it. I can't see many more questions here. We should, time is also up, so we should take leave. And once again, Ali, thank you very much for taking out time and speaking to our audience. We plan to continue with these sessions and keep a consistent information platform available for our investors in the coming days. Thank you very much. Thank you, Raida. It's a pleasure to talk to you and talk to so many people who joined. I think what you are doing a great role, and PSX is doing a great role. I think, and if you continue with this outreach, I'm sure that people will come. Both outreach on the demand side, i.e., investors, and on the supply side, in terms of encouraging good quality companies, good entrepreneurs to come to the capital markets to raise investments. And I think it's an important function of the capital markets. It's a critical function which you guys are playing. And I think it's an important capital markets, and Pakistani stock market is a very important platform where investors can get a good return and by investing in good quality companies, and where companies can come in to raise money. So thank you. And I'm very glad to help you and assist you in the goal and the role which you're playing. Thank you very much. Inshallah, we'll also try to keep a recording of this session. It will be available for people who've missed it, so they can also learn and benefit from it. Thank you, Ali. Okay, My pleasure. Allah Hafiz, Thank you. everyone. Allah.